हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और हम इस गेम को आज पूरा ख़त्म करने वाले हैं। और इस गेम का नाम है द ऑपरेटर। गेम का बेसिक्स ये है कि हम एक एफबीआई एजेंट है, ऑपरेटर है, जहाँ पे हम फील्ड एजेंट को गाइड करेंगे किसी केस के बारे में, उनको हेल्प करेंगे एविडेंस फाउंड करने के लिए, पर्सन को फाउंड करने के लिए ह्यूमन डेटाबेस का यूज़ करके, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बायम फैसिलिटी यूएस के अंदर कहीं पे है, 1992। One for yes, two for no. Do you understand? ओके, Do you believe in extraterrestrial life? नो, Are you currently restrained? यस, Are you married? नो, यप, नो, ऑब्वियस, Do you work in law enforcement? नो, Do you know who I am? नो, Do you know who you are? यस, Are आई you थिंक सो, यप। good? He's ready. ओके, तो हम जो एज अ पर्सन है वो कहीं पे किसी बायम फैसिलिटी के अंदर थे और कोई हमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था। ठीक है, और उसके बाद बोला कि मैं रेडी हूँ। और यहाँ पे हमें गेम का नेम शो हो रहा है, द ऑपरेटर। ओके, एफडीआई हेडक्वार्टर्स, वॉशिंगटन डीसी, 7:30 AM मॉर्निंग। ओके, हमारा कंप्यूटर बूट हो रहा था। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है जहाँ पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। यूज़र पासवर्ड, हमारा यूज़र नेम है इवान टैनर। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा हमारा। ये फेडरल गवर्नमेंट टर्मिनल का सिक्योर और मॉनिटर टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस, शेयरिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक गुनाहित कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे डिटेल्स रहेंगे, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, हमारा कंप्यूटर लॉगिन हो चुका है। हमारा नाम है इवान टैनर, ऑपरेटर 08891। ओके, एफडीआई के उससे हमें वेलकम का नोट मिला हुआ है। तो ये क्या है, एक ऑपरेटर प्रोग्राम है। ठीक है, जहाँ पे एजेंट एक मिडल मैन को कॉल करेंगे और वो मिडल मैन अपने हिसाब से उनको ऑपरेटर असाइन करेगा। ठीक है, जैसे कि ए पर्सन बी को कॉल कर रहा है और बी किसी और ऑपरेटर को ए को असाइन कर रहा है सम केस के लिए। ठीक है, तो बी ने सी को असाइन किया ए को, तो सी और ए मिलके एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ए केस के डिटेल्स भेजेगा और सी वाला बंदा उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरवाइजर है जो मिडल मैन है। ठीक है, जैसे कि बी सुपरवाइजर हो गया यहाँ पे। ओके, डायरेक्टर का कॉल आ रहा है एफडीए के। Hey, pal. How you holding up? Get all that booze out of you? What? You seriously don't remember? You wanted to celebrate your new job, and I quote, ahem, properly. Well, I'm happy you're here. You and me at the FDI together. It's really great. But I gotta tell you something. When we're on the job, I can't treat you differently than anybody else. You understand, right? Good. Well, I'd better run. The FDI can't run itself now, can it? Good luck with your first day. All right? ओके,
तो यहाँ पर ये जो माइक ट्रेंच है वो एफडीआई का डायरेक्टर है और ये हमारा दोस्त भी है, ठीक है। और यहाँ पे बातचीत हो रही है कि वो बहुत खुश है कि हम लोग साथ में काम करने वाले हैं एफडीआई के अंदर, फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में, ठीक है। इसी के बारे में था। यहाँ पे सारी लाइन सिक्योर है। ओके, यह है सुपरवाइजर जेवियर स्किनर। Good morning, Mr. Tanner. Welcome to the FDI. I assume you're up to speed on your mission here at the operator program? You know the basics. Good. So, just to recap, your job is to support our agents by providing them with all the help they need in the field to solve a case. That help can come in the form of fact-checking, video and audio analysis, even lab work. My job as a supervisor is to link the agents with an appropriately matched operator. Any questions? ओके, तो यहाँ पे जो जेवियर स्किनर है वो हमको बेसिक समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम फील्ड एजेंट को सपोर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन देके और उनका केस सॉल्व करने में हेल्प कर देंगे। जैसे कि कोई फैक्ट हो गया, किसी पर्सन के बारे में जानकारी हो गई, वीडियो और ऑडियो एनालिसिस हो गया और कुछ लैब वर्क हो गया। हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको हेल्प कर देंगे उनका केस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो जेवियर स्किनर है, जो सुपरवाइजर है, उनका काम है एवरी एजेंट को ऑपरेटर के साथ लिंकअप करना, कॉल लिंक करना, ठीक है। Fine, but first you need to learn how to respond to an agent's request. Let's do a dry run, shall we? I want you to find my age. This objective just popped up at the top left of your screen beside the applications menu. See it? Whenever you're stuck or if you need help, simply click on the question mark next to the objective. Go on and click on the question mark, Tanner. Yes, just like that. You can always click on the question mark if you get stuck, though I'm hoping this won't happen often. I'm giving you access to the human database. The human DB, as we call it here. You can find this and other tools to help you solve agent requests in the applications menu. Now go ahead, Operator Tanner. Solve my request. Find my age. When you find the answer, click on the objective and then select the answer on the screen. ओके, तो हमें यहाँ पे हेल्प कैसे करनी, अगर किसी एजेंट को कुछ भी चाहिए होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी जेवियर स्किनर ने एक ड्राई रन दिया हुआ है कि फाइंड स्किनर्स एज, तो हम एक डेटाबेस, हमें टूल मिल गया है जहाँ पे हम किसी भी बंदे का नाम डालेंगे और सर्च करेंगे तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ह्यूमन डेटाबेस में, जैसे यहाँ पे मिल गई है हमारे सुपरवाइजर की, ठीक है। अभी मुझे ये क्लिक करना है और इनकी एग्जैक्ट एज जो यहाँ पे दिख रही है उन दोनों को क्लिक करना है, तो ये राइट फाइंड होगी। Like that, Tanner. I'll let you get settled in, and I'll contact you later with your first real request. ठीक है, तो ये हमारा काम है। यहाँ पे हमें ऑडियो एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस भी करने को मिल जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। सुबह 9:18। Tanner, looks like your first request is somewhat of a baptism by fire. I have an agent working a homicide. It's her first case, too. Not ideal, but consider this a learning experience. I'll be monitoring you in the background. I'm patching the agent through now. हमें हमारा फर्स्ट एजेंट मिल रहा है यहाँ पे, Alexander Pandel. It's Operator Tanner, right? I don't think our paths ever crossed at the academy, did they? Anyway, I got a homicide at a bar downtown called The Sanctuary. Ironic, no? My Vic, dead on arrival, is male, Caucasian, early 60s. He was shot in the head at close range around 2 a.m., just before closing time. As far as evidence, I got some surveillance footage from the bar. And some kind of list that I found on the deceased. Any chance you can work your operator magic and help find me an ID on the shooter? Thanks, operator. ओके, तो हमारे पास I'm sending over the files. Good luck. ओके, हमारे पास केस आ चुका है। यहाँ पे कोई द सेंचुरी करके बार है डाउनटाउन में, ठीक है। वहाँ पे एक 60 साल का बूढ़ा आदमी मारा जा चुका है।
ठीक है, रात के 2 बजे के आसपास। और यहाँ पे एक फुटेज है सर्वेलेंस की जिसकी फाइल हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है इस बंदे को, किलर को फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास वीडियो एनालिसिस है। ओके, कार से उतर के बंदा आया। ओके, ओके। This is our cutting edge video analysis system, Tanner. Click on any relevant elements in the video to trigger an analysis. Go on, give it a whirl. Yeah, I know that. तो एक कटिंग एज एनालिसिस है, सिस्टम है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बंदे को फाइंड करने का ट्राई करूँगा। मुझे जो चाहिए उस पर क्लिक करना है, जैसे इस पे। तो ये स्कैन हो रहा है। Just like with the video, you can click on a photo for further analysis. The footage quality is insufficient for a proper ID, operator. You'll need to find another way to ID the killer. मैं यहाँ पे कार को स्कैन करता हूँ, अगर कोई आईडी नंबर प्लेट वगैरह मेरे को मिल जाए तो। यस, ये कार डेटाबेस के अंदर शो कर देगा मेरे को। ओके, ओके, कार का ओनर है। ये Nice. कार जो है Now, वो one रे more thing. व्हील्स पे। You got यप, something for Wells' address? Because I'll take it if you do. ओके। यहाँ पे रे वेल्स का एड्रेस शो कर रहा है, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। Yeah, I don't think that's right, operator. Looks like it's the address for a car dealership. I don't think Wells lives on the lot. What I'm Okay, looking wait. for is Wells' home address. Can you track that down? ये तो भी डिस्ट्रीब्यूटर का, मेरे को रे वेल्स का एड्रेस चाहिए जो यहाँ पे मिलेगा ह्यूमन डेटाबेस के अंदर। ओके, ओके, लास्ट नोन एड्रेस, सॉरी, ये रहा। माय बैड, कई बार गलतियाँ हो जाती है गाइस। Yeah, that'll do. Nice work. Next up is to bring Wells in. I'll keep you updated. Thanks, operator Tanner. Not bad, Tanner. Not great, but not bad either. I'll contact you later with your next request. हमारा फर्स्ट केस यहाँ पे ख़त्म हो गया, जहाँ पे हमने किलर की जो कार थी रे वेल्स की, उसका एड्रेस दे दिया है। ठीक है, शाम को 5:32 पे। एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट। Tanner, I need you to follow up on an investigation started by a previous operator. I'll let the agent working the case bring you up to speed. Barry Walker. Oh, please. Tell me you got something. God damn it! Who are you? Great. Every goddamn time we get a new operator, it takes me twice as long. I got a life outside the FDI, you know? Interests, hobbies, full-blooded passions. I don't have time for this. I got a missing persons case out here in Dryfield, Nevada. Connie Moore's her name. I canvassed the area, talked to the locals. I can't believe I'm saying this, but everyone thinks she was abducted by aliens. Middle of nowhere, hot as hell, sandy. Calling it a small town would be an insult to small towns. Look, I think it's bonkers, too. Another weird thing is, over the past year, 4 people in Dryfield have claimed they've been abducted. And every single time they reappeared somewhere in the middle of the desert out here about a month later. Connie's story's the same. She was. Popped back up yesterday. Collected her testimony myself. She had a camera on her.
Naturally, I'd like to look at the photos. But to do that, I gotta go through you, an operator. Lucky me, right? There's something off about all this. I mean, beyond all the talk of little green men. Just look for something that doesn't add up, okay? Oh, you will. I'm telling you. I got a nose for this kind of thing. I just can't do it myself because I don't have direct access. The operator program. No combination of words could possibly convey the love I hold for it in my heart. Here are the files. ओके, तो हमारे पास एक और केस आया हुआ है जो पहले किसी और ऑपरेटर के पास था। यहाँ पे कोनी मूर करके कोई लड़की है जो डेजर्ट में एक दिन पहले खो गई थी और दूसरे दिन वापस मिल चुकी है। ठीक है, उसकी फाइल हमारे पास आ चुकी है और उनका कहना है कि उसको एलियन ने किडनैप कर लिया था। ओके, गांव वालों का भी यही कहना है। यहाँ पे फोटो है निवाडा की। टाइमिंग टाइमिंग गलत नहीं है क्या शायद? अरे टाइमिंग गलत है ना फोटोज की भाई। अरे मोरे के हिसाब से भाई टाइमिंग गलत है ना। Jackpot. Connie said she took that photo the day she disappeared. Clearly, she didn't. Maybe the aliens did funny यहाँ पे things देखो, to her ये जो brain. पहले फोटो ली Maybe her हुई है brain was वो funny to 2-5 begin की with. है। Do ठीक है, me a favor. 5-2 Look की है at the और position दूसरी on the वाली map where 21-2 she की है ना। supposedly snapped this photograph. ठीक है, अभी जैसे फोन रिकॉर्डिंग का यहाँ पे लिस्ट है। ओके, 2-5 को वो 8:45 से 11:56 तक यहाँ पे कहीं पे थी। ठीक है, और 3-5 को वो यहाँ पे थी। ठीक है, अभी फोटो ली गई है। वेट, ये वाली फोटो कब ली गई है? 10:13 पे, तो इधर किधर ली गई है? ओके, माउंट मुरी के आसपास ली गई है ना। All right. I'll check this spot out. Guess I gotta do a little hiking. Probably sweat my goddamn balls. वेट, मेरा पीसी हैंग हुआ है कि क्या हुआ है? अपने आप रिबूट हो चुका है। I think there is some type of error or some type of issue. Okay, so finally we are being hacked. तो ऑपरेटर प्रोग्राम के अंदर सिस्टम हमारा हैक हो चुका है। हैक बाय हेल, आई नो दैट द मोस्ट वांटेड पर्सन। ठीक है, जो हमने पहले भी देखा, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। हाय हेल, yeah, I see your cool graphics. Okay, but you are hacking into the FDA. अपने FDA के अंदर हैक किया हुआ है भाई। हम हमारा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बंदे ने हमारे सिस्टम के अंदर हैक किया हुआ है। लिस्ट ऑफ द नेम
Yeah, I know that. हेनरी जेंकिंस। ओके, तो बार में जो बंदा किल हो चुका है उसका नाम है हेनरी जेंकिंस। हमने उसका एनालाइज नहीं किया है। या आई नो दैट। ओके, गायब हुई इंसान खनी मुरे। या भाई हमारा पीसी हैक हो चुका था। ओके, कोई हेल करके बंदा था जो मोस्ट वांटेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो मोस्ट वांटेड। ठीक है, वेट, यहाँ पे जो हमारे पास इवेंट ट्रेनर आया था एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट है, देख लो यहाँ पे। हेल रियल नेम पता नहीं है। $1,50,000 का रिवॉर्ड है इस पे 1.5 में। यप। Operator Tanner, are you there? Agent Yeah. Walker told me that your connection was suddenly cut. And when I tried to contact you, you were offline. What happened? सच बताओ कि झूठ बताओ। माय कंप्यूटर इज जस्ट I क्रैश। see. I'll have IT look into that at once. The second shift of operators has arrived. You can go home now, Tanner. See you tomorrow. And don't be late. ओके, तो ऐसे हमारा पहला दिन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ अपने पीसी को, बट समथिंग डिस्टर्बिंग, कुछ तो गलत हुआ वहाँ पे। एक बंदा जो मेरे बैकडोर में आके मेरे कंप्यूटर में घुस रहा है, ठीक है, और वो वही लिस्ट फाइंड आउट कर रहा है जो हमारे पास एविडेंस के तौर पे फाइल में आई हुई है। ओके, हम घर जा रहे हैं। मैं घर पे आके ये मेरे अपना डोर ओपन किया। बिल्ली की आवाज़। ओके, ट्रैमवे जा रही है पास से, पानी टपक रहा है। हाँ, लिटरली गुड। मतलब एक ऑपरेटर के आसपास गेम बनाई हुई है इन्होंने, फिर भी नाइट में घर जाने का जो सीन दिखाया है, मतलब प्रॉपर दिखाया नहीं है, फिर भी ब्लरी में जो इन्होंने दिया हुआ है इफेक्ट। सुबह बज गए, सुबह के 6 बज चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जग चुके हैं और वापस से जाएंगे अपनी शिफ्ट पे। टाणा। भाई डोंट टेल मी दैट कि यहाँ पे ब्रश वगैरह कर रहा है, मुंह धो रहा है और कुछ टेबलेट्स वगैरह ले रहा है। और ये भाई बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, गेम आगे जाके और इंटरेस्टिंग होने वाला है।
मैं एफडीआई हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका हूँ। ठीक है, 7:22 सुबह के। लेट्स स्टार्ट आवर पीसी। भाई यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड है ना, वो आप कुछ भी बटन दबाओगे अपने आप वही सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो। अभी जो कल का केसेस था, मैं एक ट्रेंच मेरे दोस्त का कॉल आ चुका है जो कि डॉक्टर है, Hey, pal. So, डायरेक्टर। सॉरी tell me, गाइस। how'd day number 1 at the FDI go? Everything you had hoped for? हाँ, बहुत अच्छा दिन गया है All भाई। right. That's what I like to hear. Sorry, buddy. My phone's ringing off the hook here. I gotta run. But hey, great job. And just keep plugging away, okay? I'm proud of you, Evan. ओके, अबे देख लो, यहाँ पे जो नेम लिस्ट है वही सेम नेम लिस्ट कल शो हो रही थी। Operator Tanner, यहाँ पे कोई Agent नहीं, मुझे Pendle क्या has an नाम दिख update रहा। on yesterday's case. ओके, I'll patch her through in a moment. But before I do, I wanted to let you know that from this point on, you'll talk to the agents directly. Time to cut the umbilical cord. However, as your supervisor, I'll still be in the background monitoring your activity. ओ भाई साहब, ये बंदा बोल रहा है कल जो तुम्हारा पूरा ड्राई रन था तो मैं साथ में था। अभी हम एम्बिलिकल कॉर्ड कट कर रहा है, जो कि बच्चा पैदा होता है उस टाइम वहाँ पे जॉइंट होती है उसकी नाभि के साथ, उसको कट कर रहा हूँ मैं। अब तुम डायरेक्टली एजेंट के साथ बात करोगे। भाई व्हाट अ फनी मोमेंट। ऑफ कोर्स स्किनर, मेरे को एजेंट का आ चुका है। Good morning, Operator Tanner. So you remember Ray Wells, right? या राइट, रेवेल्स, So जिसका I हमने checked कल out the address दिया you हुआ था। gave me, but no sign of Wells. Then I get a call from Vice, and guess what? Wells was found dead in a downtown parking garage early this morning. ओके, Shot. Point blank range. Now I'm working 2 homicides, and it's my first week. Welcome to the FDI, Alexandra. Anyway, the garage has cameras, and I got some footage of Wells. That's the good news. The bad news? I don't have all the footage. Sort of weird, but part of it is missing. I don't know. Looks that way, doesn't it? I don't put much stock into conspiracies, but the timing is definitely suspicious. Anyway, think you could take a look? I'm looking for anything that's different between the first and second half of the surveillance footage. Apart from Wells ending up dead and the blood splatter on the pillar, sorry for the vivid details. ओके। तो जो रे वेल्स था फर्स्ट केस में बार वाले में, जिसकी गाड़ी का नाम मिला था हमें, वो बंदा मारा जा चुका है पार्किंग गैरेज के अंदर यहाँ पे, और उसका सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे है हमारे पास। ये रहा रे वेल्स, यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है पिलर के पास। ओके, यहाँ पे कुछ ब्लर हो चुका है, कैमरा जा चुका है। ओके, और ये यहाँ पे मारा जा चुका है। Shit. इसको भी गोली मारी गई है। यप, ये रे वेल्स है, हम तो देख सकते हैं एनालिसिस करके। या रे वेल्स ही है ये बंदा। ये लाइट, ये लाइट बाद में ऑफ क्यों हो जा रही है? Look at that. Give me a sec, operator. I'm gonna check this out. चेक इट। यहाँ पे फर्स्ट वाले में यहाँ पे लाइट है, थर्ड I वाली, just found a bullet ठीक है, lodged in the light's framework. I'm और sending यहाँ you पे a नहीं photo. है। Can you run an analysis and tell me what kind of bullet I'm looking at? ओके, ये 45 एसीबी की बुलेट है, आई थिंक सो। यप। अरे भाई वो पबजी वगैरह खेलते हैं ना, तो इतना पता होता है। ओके ओके, तो जो लाइट क्लोज हुई है यहाँ पे, ये जो लास्ट वाली लाइट,
उसके अंदर बुलेट थी, इसी वजह से वो लाइट बंद हो चुकी है। और ये 45 ईस्वी की कैलिबर राउंड है। 45 caliber? I believe that's what the military and police use. Well, that's something anyway. Thanks for your help, operator. Appreciate it. If only we had all of the footage. Anyway, I should get back to the scene. Keep digging and see if you can find anything else about our perp. बट आई कांट फाइंड मोर इन्फो अबाउट किलर बिकॉज आई, भाई ये बंदा फिर से आ गया है मेरे सिस्टम के अंदर। इस बंदे का बोलना है कि मैं और वो कुछ कॉमन गोल शेयर कर रहे हैं और वो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग डील ऑफर करने जा रहा है। बट भाई मैं कैसे एक हैकर पे भरोसा कर लो? वो ये रेवल्स के केस में मेरे को हेल्प करेगा, बट बाद में मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने बोला मैं कुछ इलीगल नहीं करूंगा, वो बोल रहा है वो कुछ इलीगल है ही नहीं। तब वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड हैकर उसी ने बोल दिया है। मैं एक क्रिमिनल की हेल्प क्यों करूं? बट तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे ये बताओ चलो। ओके, अबे वो ऑब्वियसली वो एक हैकर है, वो यहाँ पे मेरे टर्मिनल में घुस सकता है, तो गैराज के टर्मिनल में क्यों नहीं घुस पाएगा? उसके पास सारे सर्विलेंस फुटेज होंगे। या एजेंट को हेल्प चाहिए। भाई गेम आगे ही नहीं बढ़ोगी, मैं इसको मना ही नहीं कर पा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन के आंसर ही दे पा रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है उसको रिपेयर कर देगा वो, जिससे मेरे को हेल्प मिलेगी। भाई वी हैव अ डील भाई, कर भाई। तो कुछ स्क्रिप्ट रन करेगा देखो। भाई मूवी का सीन चल रहा है वैसा लग रहा है मेरे को कुछ। ओके, यहाँ पे मेरे पास फिर से आ चुका है पार्किंग वाला वीडियो। ओके, अबे रेविल्स बात कर रहा है, उसके बाद उस बंदे ने उसके सिर पे गोली मारी है। ओके थैंक यू बड़ी। डॉज चैलेंजर, ये कार्रवाई है ना? ये बंदा है भाई, सेम बंदा I मेरे see को। that you ran the facial recognition software, and 0 matches turned up, operator. That's unusual.
In fact, ये you लो shouldn't even be क्वालिटी है, इसका possible. सिर पे बाल है, इसके सिर पे Our बाल FBI नहीं है, databases are दोनों exhaustive. किलर है। I'll flag this issue for later. But go ahead and share the image with Agent Pendle. Wait, I don't understand. How did you get that, Tanner? हाँ, दो चार्जर। Well, this is huge. Thanks, Tanner. I don't want to be greedy, but can you give me a better image of the shooter's face? Yeah, I want it. Yes, that's it. I'll canvass the area immediately. Maybe someone has seen our Prince Charming. I'll talk to you later. And thanks again. भाई मतलब वो हेल वाला बंदा आके बीच में वो रिकवर करके चला गया, अब उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी शाम के 5 बजे या 2 बजे, दोपहर के 1:45 पे। हेल नो, मैंने बोला था ना आ गया ये बंदा। चल खत्म करते हैं, बता। कैथरीन एंड्रूज, एफडीआई एजेंट ही है। मेरे को टर्मिनल ओपन करना है अपना, ओके, और लिखना है कॉल 187.222.19.98 नो सिक्योर। ओके, यहाँ पे जो सारी सिक्योर कॉल है वो एफडीआई के आईटी डिपार्टमेंट वाले चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में डाल रहा हूँ कॉल, और एवरी एजेंट के लिए एक आईपी दिया गया है जिससे हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैथरीन एंड्रूज का आईपी आई थिंक सो, और नो सिक्योर, जिससे ऐसा लगेगा कि नॉर्मल पीपल से बात हो रही है, किसी एजेंट से नहीं हो रही है, तो ये मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी कॉल। Hello, Operator Tanner. Hal told me that you'd be इसको मेरा calling. नाम पता है। Okay, I'll try to keep this short. About a month ago, I started working on a missing persons case. A woman reported that her husband had been gone for over 48 hours. Almost right away, the case felt different. Red tape all over the place. An unusual lack of cooperation from my superiors and colleagues. Unanswered calls. Suddenly, the FBI felt like the most incompetent department in the country. After an almost endless game of phone tag, I finally managed to get an appointment with a superior. The plan was to sit down and talk about the case first thing Monday morning. That Sunday night, I'm awoken by a phone call. The woman's apartment has burned to the ground. And the woman, what's left of her anyway, has been found dead in the ashes. ओके, तो यहाँ पे एक केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक लड़की का पति, ठीक है, पिछले 48 आवर्स से गायब था, ठीक है। तो ये इस केस का वो कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कैथरीन एंड्रूज। वहाँ पे जहाँ से गायब हुआ है वहाँ पे सब जगह पे रेड टैप रखी हुई है, ठीक है। तो इसने कुछ अनयूजुअल होता देख के अपने सुपीरियर से और कलीग से बात की, बट किसी ने हेल्प नहीं की, और सडनली एफडीआई एक मोस्ट इनकॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट घोषित हो गया पूरे देश के अंदर, ठीक है। बट कैसे भी करके इस बंदे ने डायरेक्टर के साथ बैठ के इस केस के बारे में बात करनी चाहिए मंडे मॉर्निंग में, सुबह, मंडे की सुबह। बट सडनली संडे की रात को एक कॉल आता है जिसमें बोला गया है कि जिस बंदी का पति लापता था उस बंदी के घर पे आग लग गई है और वो बंदी जल के राख हो चुकी है उसमें। Well, it gets worse. So बट I अगले started ही looking into दिन the fire, of course. I couldn't help myself. Plus, I felt like I owed it to Mia. That was the woman's name. Mia Cole. मिया Anyway, खोल। it wasn't long before my superiors found out and pressured me to stop. They told me the fire had been ruled accidental, the result of faulty wiring in our oven.
They told me I was wasting my time and precious FDI resources by looking into it, and said if I continued, I'd end up pushing papers in a basement somewhere. But that fire, Operator Tanner, that fire was no accident. I can feel it. Mia was murdered. I just have to prove it. That's why I'm hoping you can help me. Go ahead and search them in the human DB. The husband's name is Sasha. Sasha and Mia Cole. Please. ओके, तो जो बंदी मर चुकी है उसका नाम है मिया, ठीक है। अभी जब उसके सुपीरियर जो कि हमारा डायरेक्टर है माइक ट्रेंच, उसको इस बात की पता चली तो उसने प्रेशर डाल दिया इस केस के इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो फायर लगी थी वो एक एक्सीडेंट था, ठीक है। उसके ओवन के अंदर फॉल्टिंग वायरिंग थी जिसकी वजह से आग लग चुकी है, ठीक है। और बोला गया कि तुम अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, और सारी फाइल बंद करके डाल दी है नीचे की ओर। ओके, अभी जो बंदा गायब था उसका नाम है शाशा कॉल, शाशा कॉल, ठीक है। ओके, ये तो ह्यूमन डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, इरेज कर दिया गया है। मिया खोल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। मेरे Just पास another क्लियरेंस लेवल coincidence, नहीं है। right? Look, I don't know why, but someone doesn't want us looking into Sasha and Mia Cole. But we have to, Operator Tanner. It's our job. Who's going to do it if we don't? Can you help me find proof Mia's fire wasn't an accident? You'll take a look then? Oh, thank you. As far as how to access the case files, that's not really my area of expertise. But you can ask Hal. मेरे को कॉल की फाइल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है ना वो क्लियरेंस लेवल नहीं है मेरे पास, तो मैं इनकी फाइल एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। मेरे को डेटाबेस में ही नहीं दिखा रहे वो लोग। ओके, यहाँ पे जो चैट चल रही है मेरे और कैथरीन एंड्रूज के बीच में, वहाँ पे कुछ बग दिखा है इसको, और ये मेरे को एक इंजेक्ट क्वेरी देगा, आई थिंक एसक्यूएल इंजेक्शन समथिंग लाइक दैट, जिसकी मदद से मैं फाइल को रिकवर कर सकता हूँ। मैं रिकवर भी हो चुकी है फाइल मेरी। Despite being, well, a thorn in the side, you have to admit Hal gets results. सब कुछ मिटा दिया गया है, यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है केस को। साइज 2, isn't it strange? 21/2, ये मिया खोल, ये ओके। मेरे को ऐसे इसकी सैंपल चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे केमिकल एनालिसिस का यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग, ओके। अभी हम यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करना है एक बार देख लेते हैं, ओके। आयन का साइज पे डिपेंड करेगा। लिक्विड सैंपल है ये वाला, अपना वाला नहीं, ये सॉलिड सैंपल है। तो सॉलिड के लिए हम इसको 6 करेंगे आयन साइज को, ठीक है, 6.0। डेल्टा बी जो नॉन ऑर्गेनिक सैंपल का वेट है 4.2 इंटू 100, तो यहाँ पे रहेगा 420, ठीक है। और थ्रेशोल्ड रहेगा इसका सॉलिड के लिए इसका आधा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड इसका आधा 210 होगा, ठीक है। और सैंपल मैट्रिक्स साइज रहेगा ओके, यहाँ पे 5 रहेगा, क्योंकि जो लोअर वर्जन है 1.03, हम 1.04 का यूज़ कर रहे हैं। ओके, एनालाइज हो गया, स्कैन कर रहा है ये। CSLCA, हमको ये भी एक्सेस करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि सैंपल में कौन सी चीज़ है। ये तो एक एनालिसिस करेगा हमारे सैंपल को, रिजल्ट ये देखो, ओके। यहाँ पे CCVT कितना दिखा रहा है, 901, pH
6.5 ठीक है। अभी ये कैसे करना है मेरे को? ओके, बड़ा वाला फर्स्ट। ओके ओके ओके, यहाँ पे जो के है जेड है वो ये वाला है, तो ये बड़ा वाला मैं फर्स्ट पे डाल देता हूँ। 9.26। ये दूसरा वाला है 2.45। और तीसरा वाला 1.56। ओह सॉरी, 4 नहीं, 1.56 है। और चौथा वाला 10.60। जो यहाँ पे इनकी ऐसी है उसको लैब में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, गैसोलीन है भाई। वायर कट हो रहा है ओवन का, वहां पे गैसोलीन क्यों मिल रहा है? I knew it. Faulty wiring might. You know what? यस, This was no accident. या Someone started this fire and killed Mia. But why? Maybe I'll end up at a desk in a dark basement somewhere, but I'm going to keep digging into this. It matters to me. या आई नो दैट। I grew to know her. Mia, I mean. With our line of work, you try not to get emotionally involved. That's what they teach you at the academy, anyway. Almost from the start. And usually, I can turn the switch off. I learned to do that. Feel nothing. But with Mia, I just never could. She wanted to be. जो बंदी है उसको मार दिया गया है गैसोलीन डाल के, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि वो एक एक्सीडेंट है। ठीक है, जो हमने एनालिसिस करके पता चला है वहाँ पे वुड और गैसोलीन का मिक्सचर डाल के उसको जलाया गया है। व्हाट? जो बंदी मर गई है वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी जब वो जला के मार दी गई तब। Someone killed them, Operator Tanner. Someone killed Mia and her baby. Are you still there? किसी ने माँ बच्चे दोनों को मार दिया है। Oh, anyway, thanks, Operator. Because of you, I finally have proof. Knowing Hal, well, as much as someone can know Hal, I have a feeling this won't be the last time you and me work together. ओके भाई, तेरा कर्ज अदा कर दिया मैंने, अब बीच में मत आइए मेरे पास, ठीक है? हाँ बता दिया मैंने, फायर एक एक्सीडेंट नहीं था। हेल, यहाँ आई नो ये सस्पिशियस है। ये कॉल के केस को अचानक कैथरीन एंड्रिस से निकाल के बंद कर दिया गया ये बोल के कि वो एक एक्सीडेंट है। आई नो, बट वेट, डायरेक्टर ट्रेंस क्यों कॉल कर रहा है मेरे को? Operator Tanner, can I have a word? या ऑफ कोर्स, I डायरेक्टर see that ट्रेंस। you've been looking into the database entries for Mia and Sasha Cole. मैंने You बोला want ना, to tell me ये why? लोग अगर सिक्योर लाइन है तो इनको पता चल जाता है। I see. In the future, I want you to avoid anything related to Sasha and Mia Cole. It's a closed case. A total waste of your time.
And if by chance something else pops up concerning the Coles, and this is very important, you come to me right away. Understood? I'll talk to you later. मैंने बोला था ना, ये बंदा सीधा कॉल कर दिया, इसको पता है कि मैं क्या सर्च कर रहा है ह्यूमन डीबी पे, ठीक है, इनके पास चला जाता है सब कुछ। इसने बोल दिया है कि अगली बार कोई भी केस हो मत डालना। या आई नो दैट बिकॉज एफबीआई की पूरी सिस्टम सिक्योर है, ये पहले यहाँ पे काम करता था। मैं अब क्या करूँ है, ये बता मेरे को। भाई इस गेम को इसी तरह बनाया गया है कि मेरे को हेल के साथ कांटेक्ट रखना ही पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर वो हैकर है, मोस्ट वांटेड है, कुछ भी है, ठीक है। शाम के 4:55 पे। पेरी वॉका, इनका केस था डेजर्ट So वाला। who the hell am I talking to या this इट्स time? टैनर, इट्स टैनर। Good. You haven't been fired. I was afraid I'd have to explain this goddamn case all over again. I went back to where Connie said she took the photo in the desert. You remember, right? Where she said this, flying saucer supposedly landed. I didn't find a flying saucer or any aliens breathing their last wheezy breaths or anything like that. But I did find something else. You समथिंग could say डिस्टर्बिंग। that. You could definitely say that. I found stones. A bunch of stones lying there on the surface of the sand. I'm no geologist, but they look funny to me. Like they'd been moved. Put there for a reason, you know? So, I call it in. Because I'm sure as hell not gonna dig myself, Tanner. Not in this suit. A team arrives an hour later, and they start digging. Sure enough, under one of the stones, they find a body. Advanced Okay. state of decomp. They dig under another stone. Lo and behold, this time they find an entire skeleton. Turns out, we're standing on some sort of desert graveyard. ओके, तो ये वहाँ पे गया, उसने डेजर्ट के अंदर चेक किया, उसे कोई उड़न तस्तरी नहीं दिखी वहाँ पे, बट कुछ गलत दिखा, कुछ टाइप के स्टोन्स रखे हुए थे। तो उसने उसको डिगिंग करने के लिए कुछ एक टीम बुलाई, डिगिंग टीम। उन्होंने पहला स्टोन निकाला तो वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, जो ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज में थी डिकम्पोजिशन के, ठीक है। दूसरा निकाला, उसके नीचे उनको पूरा ह्यूमन स्केलेटन मिला है। तो ये जो पूरा Hard to say. एरिया है वहाँ But पे I आई थिंक counted more than स्केलेटन का 100 ग्रेवयार्ड है। stones. If they're all grave ओके, markers, well, I'll let you do the math. Yeah, messed up, right? And judging by the size of the skeleton, it belonged to someone young, Tanner. Real young. या Look, I won't beat around the bush. The medical examiner has finished a preliminary report on the skeleton, and they found what they believe is a photo of the victim in the sand, buried there by the bones. Never seen that before. Any chance you can take a look at all this and get me an ID, Tanner? Let me send you the files. ओके, मेरे पास फाइल आ रही है। ओके, Well, it's taken a हंड्रेड्स ऑफ while. Hard स्टोन्स, to access the satellite out here in वहाँ पे Roswell. हंड्रेड्स ऑफ I स्टोन्स है। mean, अगर हर एक पत्थर dry के नीचे किसी field. की बॉडी है, और सारी की सारी बॉडी यंग Okay. है। Looks like it went through. About goddamn time. बॉडी 1, हेनरी जेंकिंस, ये तो इस वाले बार वाले केस के अंदर मर चुका है। ये हेनरी जेंकिंस ही है ना, जैसे हमने हेल ने हमें बताया था। या ये हेनरी जेंकिंस ही है, इसका फेस और इसका ये देखो, ये सेम बंदा है जिसका फोटो मिला है वहां पे।
ठीक है, ये हमें हेल ने बताया हुआ था। वेलकम टू द फैसिलिटी गैबी, यू आर इन गुड हैंड्स नाउ, सिंसियरली डॉक्टर जेनकिंस। यहाँ पे कुछ बैज वगैरह है। हेनरी जेनकिंस बायोम टेक्नोलॉजीज का डायरेक्टर है। हम मैं जो स्टार्टिंग में मिला था वो बायोम टेक्नोलॉजी में ही था ना, जो स्टार्टिंग में हमारा गेम स्टार्ट हो रहा था हम लोग बायोम टेक्नोलॉजी में थे। कोई हमें कुछ पूछ रहा था, वो क्या हेनरी जेनकिंस था वहाँ पे। इसकी डेड बॉडी मिली मेरे को, अटैप्सिरिटी The skeleton appears to be female, फीमेल। ओके, estimated at 9 years of age. Starting the examination now. Initial observations show well preserved and intact bones. No visible signs of trauma or damage. The subject is missing her left incisor. The rest of the dentition looks good. No decay or disease is present. Moving on. Here's something interesting. One of the metacarpal bones on her left hand, the metacarpal 3, has a slight curvature. You don't see that a lot. So, to summarize, the subject appears to have been a female, approximately 9 years of age, with a missing left incisor tooth and a slight curvature in the metacarpal 3 in her left hand. Based on the level of decomposition, the body appears to have been buried for approximately 6 to 8 months. Further testing and analysis is needed to determine the cause of death. ओके। तो जो फाइनली बॉडी मिली है फर्स्ट ग्रेवयार्ड के नीचे, वो किसी लड़की की है जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर बताई जा रही है। उसका लेफ्ट इंसाइजर टूथ मिसिंग है और स्लाइट कर्वेचर है मेटाकार्पल 3 का उसके लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। और डिकम्पोजिशन लेवल के हिसाब से उसे आज से 6 मंथ या 8 मंथ के पहले दफनाया गया है, वो ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी नेम हमें यहाँ पे दिख रहा है गैबी। हमारे पास एक लिस्ट है नेम की, हम इसमें गैबी सर्च करते हैं। गैबी 2 है, गैबी ब्रूश, गैबी मिल्स। ओके, तो हम ह्यूमन डेटाबेस के अंदर पहले गैबी मिल्स का नाम डालते हैं, गैबी मिल्स। ओके सॉरी, ये तो लड़का है और उस एटअप के हिसाब से वो लड़की है, गैबी ब्रूश। इसका पिक्चर नहीं है बट ये लड़की है, इसकी एज 9 ईयर है। यही है आइडेंटिफाई द बॉडी, गैबी ब्रूश। बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी है। How did you find this, Tanner? Just when you think this case can't get any weirder, that's exactly what it does. But I need concrete proof it's her. Got Yeah. anything else in your bag of tricks? यह उसका मेटाकार्पल बोन जो एबनॉर्मल ग्रोथ है। I'll be damned. 9 years old, Tanner. Breaks your goddamn heart. What the hell is going on out here? And what's a connection to Connie? Okay. Okay, the examiner has just finished processing the second body I was telling you about. The one in the advanced state of decay. Let's see here. Adult male, early 60s. Ah, they got an ID on him. Quentin Spence. Want to see if that name is on your magical list too? वेट, मेरी मैजिकल लिस्ट में क्विंटन स्पिनिच, ये रहा। यप, क्विंटन स्पिनिच आर देयर। So there's definitely a link. I see some of the names have been crossed out. Can you figure out what that business means? Crossed out means they are dead. वेट, मेरे को ह्यूमन डेटाबेस ओपन करने दो। जैसे कि
इसमें नाम है, मेरे को कोई फैमिलियर नेम लेने दो। कोनीमूर, जो हमें फाइनली पिछले वाले में इसी के पास केस है कोनीमूर का। कॉनी मूर। ओके, ये अलाइव है, जबकि ग्लेन ली, नो रिजल्ट फाउंड। व्हाट द, वेट, क्विंटन स्पिनिच, QUINTON SPENCE, क्विंटन स्पिनिच। ये बंदा भी तो, इस पे भी तो मार्क किया गया है ना। ओके, स्टेटस मिसिंग, जो क्रॉस आउट किए गए वो मिसिंग है, ठीक है। Looks to be about 100 names like that. That number matches the stones. God damn. हाँ, And if I was a gambling man, I'd say the circled persons are still alive. Like our Connie. There's something else about Spence, Tanner. तो जो बंदों का क्रॉस आउट किया गया है वो सारे मारे जा चुके हैं, और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ नेम है लिस्ट के अंदर, और सेम स्टोन्स वहाँ पे है। They found him buried in a lab coat with some, you're never going to guess, floppy disk sewn into one of the pockets. Remember what I said about this case getting weirder and weirder? Now the second disk password protected. Open that second floppy disk and give me an address tied to Spence. Something I can look into. I'm getting a little restless with you doing all the work. The operator program. Oh, I'm sending everything your way. ओके, तो जो क्विंटन स्पिनिच मिला है वहाँ पे, वो लैब कोट के साथ दफना दिया गया था, बट उसके लैब में कोट के अंदर 2 फ्लॉपी डिस्क मिली जो छुपाई गई थी, जो कोई ढूंढ नहीं पाया है। एक फ्लॉपी डिस्क ओपन है और दूसरी वाली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये देखो, जैसे क्विंटन स्पिनिच, इसका बैच आईडी है क्लियरेंस लेवल 3 है। जैसे फायर के अंदर, नहीं फायर के अंदर इतना क्या, ओके ग्रे वर्ल्ड में ये जो बैच है ये 4th लेवल का क्लियरेंस लेवल है, और ये हेनरी जेंकिंस है, और ये हेड ऑफ ऑपरेशन क्विंटन स्पिनिच है। ये दोनों बंदे अलग अलग है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क 1 R&D 1 डॉक्टर स्पिनिच, फ्लॉपी डिस्क 2 वेट 1 और 2 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे FMP1138 और RES.2 दोनों नाम दिए गए और कुछ सिंबल बनाए गए। फ्लॉपी डिस्क में ये रहा FMP1138, ओके। यहाँ पे सेम सिंबल है चाबी वाला। तो दूसरी फाइल कौन थी, RES2, यहाँ पे लॉक वाला सिंबल है। अभी फोटो के हिसाब से ये दोनों साथ में हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को साथ में रखे टू अनलॉक द फाइल्स यूज, ओके दैट्स नाउ इंटरेस्टिंग। मतलब वो वाली फ्लॉपी डिस्क ओपन करने के लिए पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है। फ्लॉपी डिस्क ओपन करने के लिए 105 एंड एन मिल गया। इसका कन्फेशन है, इसके कन्फेशन में बोला गया है कि अगर आप ये पढ़ रहे हो तो मैं जिंदा नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी ड्राई फील्ड डेजर्ट के अंदर दफना दिया गया होऊंगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम क्विंटन स्पिनिच है, मैं हेड ऑपरेशन हूँ बायोम फैसिलिटी में, और मैं लेटर लिख रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू रिजाइन माई जॉब। बट इस जॉब से रिजाइन करना कोई सिंपल बात नहीं है।
प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे डेजर्ट में जाके कोई साइट को फाइंड आउट करना था, और ये मेरी पनिशमेंट थी मेरी जॉब रिजाइन करने के लिए। मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ। और अगर आप मुझे फाउंड कर रहे हो तो आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप ये फ्लॉपी डिस्क भी फाउंड कर रहे हो। जो भी बंदे यहाँ पे दफनाए गए हैं इस सैंड के अंदर, वो सारे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट ईव। ईव लेड बाय, ईव का जो मेन डायरेक्टर है, जो चला रहा था इस प्रोजेक्ट को, वो डॉक्टर हेनरी जेंकिंसन था, जो हमारे पहले वाले में मारा जा चुका है यहाँ पे, ठीक है, बार के अंदर। ये रहा हेनरी जेंकिंस, ठीक है, डॉक्टर। वो, अरे वो बंदा मारा जा चुका है, उस पर ऐसे भी ब्लेम नहीं जा सकता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर कर रहा है। हमारा इंटेंशन था कुछ ढूंढना, ठीक है, और हम लोग बहुत आगे आ चुके थे। मैं फेस करने के लिए तैयार था पनिशमेंट। ओके, ये डॉक्यूमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि एक पॉकेट थी जो वहाँ पे थी, और वहाँ पे 2 फ्लॉपी डिस्क थी जिसके अंदर ये सारा मैटर है। हमारे पास पावर है। ओके, ये रहा एड्रेस, बायम फैसिलिटी 22 ईस्ट बॉर्डर स्ट्रीट। स्पिनिच काम I'll कर let रहा it था go to बायम your फैसिलिटी में। operator head, but that was actually somewhat impressive, Tanner. The address you sent, it's not far from here. I'll check it out first thing in the morning. Tonight, I think I'll help the team exhume the rest of these bodies. इसमें एफएमपी Scrubs में and इसमें कुछ ग्राफ God दिए help गए us, हैं। Tanner. God help every single one of us. और जिस जगह पे है वहां से वो बंदा दूर भी नहीं है, तो वो बंदा वहां पे जा रहा है, ठीक है, देखने। बट आई थिंक सो देयर इज अ कैच। Well, look, you need to do something about it. He's poking around, asking too many questions. He's going to expose us all if you don't rein him in. Yes, his shift is over. Yes. All right. Yeah, fine. We'll talk later. Bye. सुपरवाइजर किसी से बात कर रहा है मेरे बारे में कि हम मैं एक्सपोज कर दूंगा सबको, समथिंग समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। बट आई डोंट थिंक सो। सम लेट्स गो फाइंड आउट। भाई यहाँ इस गेम में पूरा का पूरा जो साउंड, थोड़ा सा भी साउंड आ रहा है, वो सारा साउंड मैंने फिर से कुछ टैबलेट्स वगैरह ले लिए।
725। मैं अपना कंप्यूटर फिर से ओपन कर रहा हूँ। There is lots of suspicious things are done here. मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है भाई। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी पे। ओके, डायरेक्टर माइक ट्रेंच का कॉल आ चुका है हमें सुबह सुबह। Good morning, Evan. डायरेक्टर ट्रेंच, गुड मॉर्निंग। About yesterday, this business with the coal files. Sorry if I came down on you a little hard, buddy. It's just that I know you have what it takes to rise in this place, Evan. Become a supervisor. Hell, maybe even replace me one day. But I can't protect you if you start poking around in the wrong places. Okay? ओके, तो डायरेक्टर ट्रेंच मुझे ये बता रहा है कि कल उन्होंने जो कॉल फाइल के लिए मुझे डांटा था, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने सॉरी बोला है और बोला है कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम अच्छा काम करते रहो, बट ऐसे रॉन्ग केसेस के अंदर मत जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। Thanks. Guess the FDI has got me wound a little tight these days. Well, I'd better get back to it. You have a good one. All right? Again, I can't tell you how happy I am to have you here at the operator program, Evan. That way, I can keep a close eye on you, can't I? Let's grab a beer later this week, all right? Once everything calms down in the madhouse. भाई सुबह सुबह डायरेक्टर ट्रेंच, ओके, बैरी वॉकर का कॉल आ चुका है जो एक एजेंट है। That you? Tanner, did you give that address out to anybody? Well, somebody beat me to the facility, Tanner. ओके, इसको कल जो हमने ग्रेवयार्ड में एड्रेस दिया था, ठीक है, क्विंटन स्पिनिच के वहाँ, तो वहाँ पे किसी ने इसको मार दिया है और बायोम फैसिलिटी को लास्ट नाइट किसी ने जला दिया है। और अगर मैंने एड्रेस नहीं दिया है तो एफडीए में से किसी और ने वो एड्रेस दिया है जो कि एक मोल है। Well, an investigative team came before me and logged the remaining evidence back at the department. But I can't access it directly. I'll have to go through the ओके, और इन्वेस्टिगेशन टीम उससे पहले जाके सारे एविडेंस ऑलरेडी डिपार्टमेंट में ले जा चुकी है। From what I can tell, there should be some security footage there that should shed some light on what happened here. Hopefully, it won't be too hard to prove this was arson. ये वही किलर है जो ऑलरेडी हमें बार में दिख चुका है, ठीक है, डेजर्ट में दिख चुका है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पे कुछ कोड डाला हुआ उसने, ये रहा कोड 014483। ओके, ये अंदर गया, वापिस आया, ये अप्रूव करना है कि ये एयरसन है। ओके, ये नहीं है, ये कुछ गलत है, अभी मेरा माइंड नहीं चल रहा है। तो अभी मैं कैसे प्रूव करूँ कि ये एयरसन है?
यार मेरे को सस्पेक्ट दिख चुका है, नो। ओके हाँ, ये ओके, सॉरी। ये जेरी कैन है। ओके Yeah, that's not a box of wine, is it? Can you get an ID on this guy? नो, That नो would be मैच इन too डीडीबी। easy, huh? ओके, I'd like तो to ये go to the बंदा facility. जेरी कैन Go लेके take a look गैसोलीन around. लेके अंदर एंटर हुआ है जलाने के लिए, ये वो दिख रहा है। Collapse on me. ठीक है, उसका कोई But I डेटाबेस need नहीं a है, वो हम code चेक for कर the लिए है। door. You see where I'm going with this, Tanner? ओके, हमारे पास ऑलरेडी कोड है ना, 01448 जो अभी हमने, ओ वेट, 01448 Let me see if this ओके, works. ये कोड करेक्ट है वैसे भी। All right, I'm in. Damn it! The smoke in here will ruin this suit too. That's 2 suits in 2 days. Tanner. Now, let me see if I can find something useful. Something that the investigative team left behind. Sure as hell won't be easy. इन्वेस्टिगेशन टीम कुछ Just छोड़ा about तो नहीं burnt to a होगा? crisp. I don't know what went on here. But if you ask me, it's a pretty elaborate security system for a medical facility. Not much, to be honest. You ever wonder what the baby of a hospital and a prison would look like? Because that's exactly what this place is. While I look around, maybe you could dig more into our little arsonist friend. Anything that you can find, Tanner. I look picky to you, an ID, a link to another case, his favorite flavor of ice cream. Just give me something, all right? Charming fellow. Who's the lead on the other investigation? Ouch. Tough draw for the rook. Hold on. Looks like I found something. What the? You see what I'm seeing, Tanner? Looks like our gal, Connie Moore, was a bio-impatient. I don't know. I mean, I don't think so. Passed her polygraph with flying colors. She told us the truth. Her truth, anyway. Contact Skinner to update Pendle on her parking garage killer. I'm sure she'll be thrilled. I'll keep looking around here. The world's biggest ashtray. Tell me if you find out anything new about our pyro head, Tanner. And I'll contact you if I come across something on my charred end over here.
Yes, Operator Tanner? What kind of information? All right. I'm forwarding the call, Tanner. But I hope you're not just sending Pendle on some wild goose chase. Operator Tanner, what can I do for you? What? You're kidding. Okay, so our murderer likes to play with fire too, huh? This guy just gets better and better. By any chance, did any clues pop up where we might locate him? To Jenkins? So it comes full circle, does it? Well, whatever that address is, I'll take it. Nice. So, what exactly is this place? If Wells Killer's there, I assume it's not a petting zoo. I see. Well, I'm on my way. I'll contact you when I get there. Thanks, Tanner. Maybe now we can finally book this guy. Tanner, I'm at the lab. I think our man is here. I spotted his car in the garage before I went in. The door was unlocked, actually. It's real weird in here, Tanner. Like everybody suddenly took off. They left all their beeping lab equipment behind. But I don't see any sign of Wells' killer. Drop the phone. Slide your gun over to me. Slowly. On your knees, Agent Pendle. You? How do you know my name? You might want to close your eyes. You don't want to do this. I'm a federal agent. Agent Walker, FBI! Drop the gun! Drop the gun! Move away from her! Now! It's locked! What did you do? Hands up! Turn around. Turn around! Hands on your head! Pendle, you okay? Walker, we have a problem here. What'd you do? Open the door now! It's not opening, Walker. Open the door now! Operator, you there? There's a bomb! This bald-headed psycho has trapped me in a room with a bomb! It's my third day! The display says 20 minutes and 21 seconds, and it's ticking down. You gotta help me here. Come right back. Understand me, Tanner? You come right back. Yes, Operator Tanner? Stay calm, Tanner. Okay, let me think. Unfortunately, our more seasoned operators are presently occupied. I'd send a team, but they'd arrive much too late. That means you'll have to defuse the bomb, Operator. I'm sharing the FDI's bomb defusal manual. You haven't gone through bomb training yet, but we have no choice. What I'm about to tell you is important. Do not read the entire manual. You don't have time. Stay calm and follow the instructions from the beginning. Do you understand? There are wires, a controller, a battery, a keypad, and, a display, I guess. And operator, make sure you follow the instructions at the beginning. I really don't want to go out like this. I'd say gasoline. Tanner, this isn't how I imagined I'd go out. I
don't really know. A single battery pack? I think. Wait, it says 9 volts, 0.3 amps, 2,000 milliamps hour. There are 2 gas cans connected to the bomb. Are you sure that's important? Don't you have a guide to follow or something? One for each digit, and an enter and a confirm button. 12 in total. I don't know what type it is. The numbers are made of little bars. There's 7 of them. Is that important? We don't have all day, operator. Nothing unusual. Wait. There's a switch behind the display. Looks like a power button. There are a lot, but I'll try. The power module. It's a battery. Has 2 wires, a red and a black. 2 wires are connected to the explosive, a red and a black one. The display and the numpad have 4 wires each, a red, a black, a green, and a yellow. That's it. It says ABM 186511. Okay. Oh, Damn it, Tanner! You failed to identify the bomb's correct archetype, and now Agent Pendle is dead! Firefighters are on their way. And Agent Walker has safely evacuated with his arrest. He's transporting that SOB to the FDI. We'll question his ass first thing tomorrow. You better believe it. Now go home, operator. I think you've done enough for today.
devastating incident earlier today as the facility went up in flames, claiming the life of an FBI agent on the premises. I'm here at the scene of Biomedica Technologies Laboratory, where firefighters have been battling a blaze for hours. At this time, we still don't know what... I told you we'd be working together again, didn't I? So I guess Hal has filled you in. The deal is this. If we can find out who's watching these feeds, we can find our mole. But first things first. We need to identify the person being watched in this second feed. Can you help me, operator? Thanks, Tanner. Okay, here's the feed. Hal told me that to share it, I had to type in, press this, and then... All right, you should have access now. Send me the name of the person via the human DB as soon as you have it. Thanks, Operator Tanner.
Yeah, right, Tanner. Wait, you're kidding, aren't you?
The people who were watching Mia are watching you? What is going on? And the feed is ending up at headquarters? Maybe I shouldn't be surprised. Still, I am. Okay, I'm on my way, Tanner. We'll get to the bottom of this. Operator Tanner. You all right, Tanner? You sound kind of funny. Look, I'm down here in the basement with this guy, you know, Mr. Not in any of our databases. Real piece of work, let me tell you. And there's a bit of a hiccup. He says he'll talk, but he'll do it under only one condition. He says he'll only talk to you. You gotta do the questioning. My 2 cents? This guy, I mean, he's a real pro. We won't get anything out of him unless we play ball. That's just the way it is. It's a bit unorthodox pulling an operator into an interrogation, I realize. But if you talk to him, maybe we can find out who this guy is. Why he's been doing, you know, what he's been doing. I'm putting the phone down between me and our little friend here. Hello, Mr. Tanner. Listen, I have a deal for you. I'll answer your questions, but you have to answer mine. And I will know if you lie, so don't. You don't have to, but I think you will. I have a feeling you're full of questions. So every time you answer one of my questions, if I feel you've been honest, I will answer one of yours. Why don't we try one? I'll start. Do you know why I wanted to talk to you? Specifically, you, Mr. Tanner? See? You told the truth. That wasn't so hard, was it? Now, you can ask me a question. Go on. I'm ready. My name? I have no name. My previous identity was erased when I started doing what I do. Even if I gave you my old name, you wouldn't find it in your database. I've been expunged. They are quite thorough. Now, who is Mike Trench, Mr. Tanner? Ah, I see. Your turn, Mr. Tanner. My main mission is to cover up any canceled projects. What do you know about Sasha Cole? All right. It was a control question. I know about your relationship with him. I wanted to make sure that you would tell the truth. Maybe that answer disappoints you, but it's the truth. Anyway, it's my turn. How did you come to retrieve the missing footage from the garage? How? That's really interesting. Now you can ask me a question. The fact that you're even mentioning its name means I've failed. The goal of Project Eve was to develop a means to alter personal memory, plant new, false memories, and erase old, real memories. Quite valuable. It was started and led by Dr. Henry Jenkins, but it was canceled after there was a leak. There were over 100 test subjects in Project Eve. When a subject died, which often happened, the subject was buried in the desert, out by Dryfield, at the DFPD. That's all I know about Project Eve. And do you know Hal's true identity?
sure? That's too bad. That's all the information that I need. We're done here. Well, I broke my promise. What are you gonna do? Put me in prison? I'll take things from here. Come on, let's go, Mr. No Name. Back to your palatial cell. Tanner, you and I'll talk later. Tanner, are you there? Okay, I'm on the 11th outside the door. Not gonna lie, I'm a bundle of nerves. Breathe, Catherine, breathe. You see me, right? Oh no. Bad news, Tanner. The code Hal gave me isn't working. Not the start I was hoping for. What? That's the operator floor. Can I bring you a coffee or anything? Sorry, I tend to make bad jokes when I'm nervous. Okay, on my way. Okay, I'm back down at 8. Just one problem. I don't know this floor, Tanner. But I guess you probably do, right? Anyway, I'm in the entrance, doing my best not to look suspicious. But it's hard when you're basically waiting in a pool of your own sweat. Where do I go? All right, I'm in a hallway now. There's a door straight ahead. There's a hallway to the right and one to the left. Where do I go, Evan? Okay. Okay, there's a door at the end of the hallway. 2 doors on the right. 1 door and a hallway on the left. Where do I go now? Gotcha. The
hallway's a dead end. That leaves us with a hallway to the right and 2 doors. Do I take the right door or the left door? All right. I see the door to the stairway. Phew. I can breathe a little easier now. Okay, I'm heading back up to 11. Follow me on the cameras. All right, I'm back at 11, outside the stairway door. What do? I assume I can't knock. Okay, I'm in the hallway, en route to the locker room. Looks clear. Follow me on the cameras. Someone's coming. Close call. Tell me when it's clear. Game on. Okay, I'm approaching the technician locker room. I'm not hearing any noises from inside. That's good. You gotta be kidding me. The locker room needs a code too. I know it's the FDI, but this is excessive. Try some codes? Seriously, that's our plan, Tanner?
I'm going in. Are you following me on the camera? I'm in. All right. Time to find the right locker. Should be this one. Okay. I'm gonna need a minute to pick this. In the meantime, make sure the path to the server room is clear. It should be, but just check. What? Okay, well, make them go away, Tanner. Rebecca Davis. Oh, who am I speaking to? Matthew Smith? Really? Because on my end it says Evan Tanner. Why does it say Evan Tanner when your name is actually Matthew Smith? And you said you're from IT? Is that it? Why is an operator working in the IT department? Oh, I see. I did that once for a woman in HR. I mean, it was a long day, but I did it. You know, I just thought of something. Usually when I deal with IT, I deal with Chuck Beatner. Chuck Beatner's wife? Chuck doesn't have a wife. He's single. But can we just put a pin in this talk of Chuck for a second and go back? You said you spotted an issue with my computer. What was the issue? Unusual activity? To be honest, the only unusual activity is this conversation that you and I are having. And why does it have to be dealt with right now, during normal working hours? Oh. Okay. Well, if that's the situation. So, what would I have to do to fix this issue? Take a break? That's going to be hard. I'm working on something, actually. Cafeteria finance report. You'd be shocked to learn how much the FDI is spending on tapioca pudding. How long do you think this would take to fix? At least an hour? Really? Well, I guess if you want to do something right, it always takes longer than you'd like, doesn't it? Good luck fixing the issue. Who? Never mind. Anyway, it's taken me forever. But I've almost picked this lock. Are you watching me? There, finally. I got the key. I'm heading toward the server room. Should be there in a few seconds. Follow me on the cameras. I'm in.
plug Alice's device in. Okay, it's plugged in. What's going on, Tanner? Am I spotted? Okay. Trench? Trench is working with them. Then this goes all the way to the top. Is it running? Okay. This is Dr. Jenkins here with control session number 24 for the patient Sasha Cole. The patient is under trichlorohydrin and has received 10 cc's of FMP 1138 Mark 5 2 hours before the following session. All right, let's begin. You will answer my questions as usual. 1 for yes, 2 for no. Do you understand? Do you believe in extraterrestrial life? Are you currently restrained? Are you married? Do you work in law enforcement? Do you know who I am? Do you know who you are? Are you Evan Tanner? Good. He's ready.
know who I am? Do you know who you are?